You were waiting for me, so let's study, okay? आज का दिन स्टार्ट किया था टेस्ट से, पर काफ़ी ख़राब गया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी मैंने फिज़िक्स का पोर्शन करके रखा है ना, वो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, इसलिए मुझे फिर से पढ़ना होगा। लेट्स स्टडी, ओके? XYZ हाई। नहीं रो रही थी, मजाक कर रही हूँ। क्यों रोऊंगी? बोले तो क्यों रोऊंगी मैं? नहीं रो रही हूँ। शुभ भी नहीं रो रही थी। लेट्स स्टडी, ओके? लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। मुझे ना क्लास 12 का पोर्शन फिजिक्स रिवाइज करना है। आज मैंने ना वो जो मैंने करके रखा था, मुझे लगा कि मैंने क्लास 12 का फिजिक्स कर रखा है तो अच्छा है, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। आज मैंने 180 में मुझे आई थिंक 22 मिला, तो मुझे अच्छे से फिर से पढ़ना होगा। हाउ वाज योर डे? नहीं पता, ठीक ठाक ही गया होगा शायद। एटम्स प्लांट्स को अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या ही फायदा पढ़ने का यार, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। हाँ, उस कॉपी में किया है ना, शायद शायद हाँ शायद। अगर तुम इस स्टेटमेंट पे शायद बोल रहे हो कि मैंने अभी भी बोला मैं सो के उठी, तो शायद नहीं, मैं सच्ची में सो के उठी, क्योंकि पहले वाले सेशन में तुम लोग नहीं थे, कोई और अननोन लोग थे। ये लो। मुझे इसको ना अच्छे से ऑयल लगा के ना ढक देना चाहिए, काफ़ी वो हो गया है, ड्राई हो गया है। हर चीज़ के लिए खड़े होना पड़ता है।
हाँ अपडेट आ गया तो पेपर पैटर्न ना चेंज वाला दिन में ही आया था। तुम कहीं गए थे दिन में, मतलब कि इवनिंग सेशन जो किया था हमने तभी। तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो एलेक्स। रोना तो हम लोगों को चाहिए ना, जो पढ़ नहीं रहे हैं। पर मेरा तो खतरनाक होने वाला है। 180 मिनट 180 क्वेश्चन, हाँ तो सही है ना। वैसे टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। जब 200 क्वेश्चन होता था तो वो 20 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे थे। और हम लोगों के सेंटर में तो पेपर बाइंडिंग का टाइम जो है ना वो उसमें ऐड नहीं करते। जैसे ही बेल रिंग करेगा तभी बाइंडिंग की स्टार्ट होगी ना, तो आई थिंक ठीक ही है। चलो करते हैं। लेकिन मेरी स्पीड इतनी तेज़ भी नहीं है। भी 180 ही करना था। हाँ करना तो उतना ही था। वो चीटिंग हो जाएगा फिर ना, वो मैं नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आज ही रिवीजन करूँ या कल करूँ? आज कंप्लीट करके ना दूसरा वाला कैपेसिटेंस वाला चैप्टर करके भी कल पूरा, नहीं कल कल कैपेसिटेंस वाला कर लेते, फिर कल कल करके ना ऐसा ही हो जाता है मेरा। मैं भी पढ़ लेती हूँ, ओके रिवीजन मैं आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब हमेशा मैं टालती हूँ ना तो वो ही करता है।
हाँ आज ही कर लेती हूँ। आज मेरा ना जो भी मैं मॉडर्न फिजिक्स कैसा है, कैसी हो, मॉडर्न फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर रखा था और स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज टेस्ट दिया ना तो पता चला कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे ना 180 में पार्ट 2 वाली फिजिक्स में सिर्फ कितना मिला बोलो तो, कंप्लीट है जो मैंने रिवीजन भी कर रखा है उसमें आई थिंक 20 जितना मिला 180 में। तो मैं एक बार रिवीजन करके फिर से वही टेस्ट दूंगी, फिर कितना आएगा देख लेंगे। अभी पढ़ते हो कि मैं काफ़ी स्ट्रेस हूँ उस चीज़ के लिए, बस रो नहीं पा रही हूँ, वो अलग बात है। 5 क्वेश्चन आते हैं उससे नीट में। ओके अब मैं पढ़ती हूँ जितने भी आए। 9 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड आर्मस्ट्रॉन्ग वी इज इक्वल्स टू 2.19 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। जेड अपॉन फॉर्मूला रटने से भी ना भूलने की ज़्यादा चांसेस रहती है। आर इज इक्वल्स टू 0.259 एटॉमिक नंबर अपॉन एन, ना गलत हो गया, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। बोर postulates, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर postulates, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा कुछ लगाती हूँ ना, electron can revolve around nucleus in a certain fixed orbit called stable orbit. Okay. For stable orbit, L equals to n h by 2 pi 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 n h by 2 pi. For stable orbit, n h by 2 pi n h by 2 pi n 2 pi n h by 2 pi. Stable orbit, L is equals to n h by 2 pi, L equals to n h by 2 pi, L is equals to n h by 2 pi n h by 2 pi. Integral multiple of n h by 2 pi. L angular momentum, L angular momentum is in certain fixed radius orbit called a stable orbit. First stable orbit, L is equals to first stable orbit of h by 2 pi, integral multiple of h by 2 pi n 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 h by 2 pi. This is for stable orbit. For stable orbit, angular momentum is equals to, okay, this is for stable orbit. Stable orbit, for stable orbit. Stable orbit. Frequency of photon corresponding to transition of electron. Frequency of photon corresponding to transition of electron. H mu is equals to EH minus EL. Higher energy level minus lower. Higher energy level. Energy of photon is equals to energy of higher level minus energy of lower level. Frequency of photon corresponding to transition of electron. Frequency of photon corresponding to transition of electron, h nu. Energy of photon is equals to energy higher energy minus lower energy. 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 Frequency of photon corresponding to transition of electron. Frequency of photon corresponding to transition of electron. Frequency of photon corresponding to transition of electron. Frequency of photon corresponding to ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ना।
इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ओके, ये हो गए है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी corresponding to transition of electron. Energy of photon is equals to energy from higher level minus energy from lower level. Energy from higher level minus energy of lower level. Energy of photon, energy of higher level minus energy of lower level. Emission spectrum, energy of energy released. Emission spectrum. Emission spectrum, energy released when electron jumps from higher orbit to lower orbit. Energy released in the form of photon. Okay, energy of photon, energy of higher orbit minus energy of lower orbit. Lower orbit. Bohr radius r is equals to 0.529, 0.529 n square upon z. 0.529 किस चीज में तू दिमाग लगाती है जो यहाँ पर दिमाग नहीं चलता तेरा? r is equals to 0.529 n square upon z आर्मस्ट्रॉन्ग। अरे वो सितंबर में किया था ना तूने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हो गए हैं। कुछ ना कर लेती तो रिवीजन ही कर लेती ना। अब रिग्रेट करके क्या फायदा? Bohr radius r is equals to 0.529 n square upon z Armstrong. Velocity is equals to 2.19 into 10 to the power 6 into z upon n meter per second. Energy is equals to minus 13.6 z square upon n square electron volt. काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव था। मैंने काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव बना, हाँ नेगेटिव बना दिया तो पोटेंशियल को पॉजिटिव कर दिया ना। ऑप्शन में था ही नहीं वो वाला। ऑर्बिट नंबर है वो, एन ऑर्बिट नंबर है। कोई फायदा नहीं इस साउंड का, इरिटेटिंग लग रहा है। टू 2.19 into 10 to the power 6, 2.19 into 10 to the power 6 z upon n meter per second.
मुझसे नहीं होता है। Just 500. Just 500. Your target is 500. Your target is 500. 500 से आगे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं. Just 500. Radius of the atom R is equals to 0.529 into n square upon z. n square upon z Armstrong मा हुँदैछ केमा हुँदैछ Armstrong मा हुँदैछ क्या velocity is equals to 2.19 into 10 to the power 6. 2.19 into 10 to the power 6 n by z और z by n. कंफ्यूज हो रही हूँ तो मैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे कंफ्यूज हो रही हूँ. z upon n, z upon n, meter per second. This is velocity. Okay, velocity meter per second मा दिएको छ. Radius Armstrong मा दिएको छ. .529. साला मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं गलती से आ गई यहाँ पर. न्यूक्लियर की पोर्शन होगा ये तो. न्यूक्लियर की बस यहाँ तक ही मत पढ़ दे, ध्यान लगा के पढ़ दे. मेरे पेड़ दुखते हैं ऐसा मुझे फील हो रहा है. .529 into n square upon z. Velocity मा 2.19 into 10 to the power 6 z upon n. E equals to -13.6 into z square upon n square. ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है? लेकिन मैं नहीं सोऊंगी, कुछ भी हो जाए. इस बार सो गई ना तो ना हमेशा की जैसे सो जाऊंगी. Energy is equals to -13.6 into z square upon n square electron volt. T is equals to 1.51 into 10 to the power minus 16. 1.51 into 10 to the power minus 16 n cube upon z square. N cube upon z square. Okay, so you have four formula. R is equals to 0.529 into n square upon z Armstrong. Then you have another formula for velocity. V is equals to 2.19 into 10 to the power 6 z upon n meter per second. Third formula is for energy. E is equals to minus 13.6 n cube upon z cube बोला, z square upon n cube, z square upon n cube इलेक्ट्रॉन वोल्ट. गुड. लेकिन इसमें n क्यूब नहीं, n भी स्क्वायर ही होगा. ओके, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -13.6 -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Time. T is equals to 1.51 into 10 to the power minus 16
16 n cube upon z square second, n cube upon z square second, 1.51 into 10 to the power minus 16, 1.51 into 10 to the power minus 16, 1.51 into 10 to the power minus 16, n cube upon z square, 1.51 into 10 to the power minus 16, n cube upon z square, 1.51 into 10 to the power minus 16 n cube upon z square, 1.51 into 10 to the power minus 16 n cube upon z square second, n cube upon z square, n cube upon z square. T is equals to 1.51 into 10 to the power minus 16 n cube upon z square. मैं बाहर जाके पढ़ के आती हूँ कि r is equals to 0.529 into 0.529 n square upon z square. Armstrong velocity is equals to 2.19 into 10 to the power 6 z upon n meter per second. V is equals to 2.19 into 10 to the power 6 z upon n meter per second. V is equals to 2.19 into 10 to the power 6 z upon n meter per second. V is equals to 2.19 into 10 to the power 6 z upon n meter per second. Minus 13.6 into z square upon, बाहर पढ़ पाओगे तो बाहर पढ़ लो, पढ़ पाती हूँ, वहाँ ठंड भी है, अच्छा रहेगा. V is equals to 2.19 into 10 to the power 6 z upon n meter per second. E is equals to minus 13.6 into z square upon n square, z square upon n square electron volt. E is equals to minus 13.6 into z square upon n square, minus 13.6. E is equals to minus 13.6 z square upon n square electron volt, z square upon n square electron volt. Then we have a time t is equals to 1.51 into 10 to the power minus 16, okay, n cube upon z square seconds, n cube upon z square second, n cube upon z square second, n cube upon z square second. Okay, Rydberg formula for hydrogen, Rydberg formula for hydrogen H, 1 by lambda is equals to r. What is the value of r? R is Rydberg constant. Okay, 1.1 into 10 to the power 7, 1.1 into 10 to the power 7, 1.1 into 10 to the power 7. This is Rydberg formula. 1 by lambda, 1 upon lambda is equals to r, 1 upon nl, lower orbit square minus 1 upon higher orbit square. This will come in Armstrong. 1 upon lambda is equals to r, Rydberg constant, 1 upon nl square minus 1 upon nh square. This is Rydberg formula for hydrogen. Rydberg, R-Y-D-E. Rydberg, B-E-R-G, Rydberg formula, Rydberg formula, okay, for hydrogen, Rydberg formula for hydrogen, this comes strong, the value will come in Armstrong. 1 upon lambda is equals to r, 1 upon nl square, lower orbit square minus 1 upon higher orbit square, 1 upon lower orbit square minus 1 upon higher orbit square, 1 upon lower orbit square minus 1 upon higher orbit square. Armstrong. Okay, 1 upon lambda is equals to 1 upon lambda is equals to 1 upon lambda is equals to r, Rydberg constant. The value of Rydberg constant is 1.7 into 10 to the power 7, 1.1 into 10 to the power 7, 1.1 into 10 to the power 7 meter inverse, 1.1 into 10 to the power 7 meter inverse, 1.1 into 10 to the power
minus 7 meter inverse. 1.1 into 10 to the power minus 7. 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 1 upon lambda is equals to r. इस रिडबर्ग चाचा को ना मुझे लात का दिल करता है. Rydberg constant 1.1 into 10 to the power 7 meter inverse. 1.1 into 10 to the power 7 meter inverse. MVR. Angular momentum, okay, for stable orbit, okay, n 2 pi integral h by 2 pi stable orbit के लिए angular momentum L is equals to mvr. angular momentum mvr ऐसे ही कटने वाला है मेरा. mvr L is equals to mvr equals to n h upon 2 pi 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 n h upon 2 pi. mv square upon r is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. एंगुलर मोमेंटम है ना ये. हाँ, ये वाला एंगुलर मोमेंटम है. mv स्क्वायर अपॉन r. ये तो सेंट्रीपिटल है यार. सेंट्रीपिटल ही है ना. हाँ, सेंट्रीपिटल ही तो है. mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल है. बेशक सेंट्रीपिटल. mv square upon r. Centripetal force is equals to Coulomb's law. Centripetal force is equals to Coulomb's law. 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. 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 Lambda is equals to hc upon del E. 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 hc 12400 upon del E in electron volt. E in electron volt. Okay. लैम्डा. अच्छा, जैसे भी करके कर ले बहन, प्लीज मेरे लिए कर दे. mv square upon r is equals to k q1 q2 upon r square. Lambda is equals to hc upon del E. Lambda is equals to hc upon del E. This del E should be in electron volt. Del E should be in electron volt. ये थोड़ा पीछे रखना, मुझे आ रही है. hc upon del E. 12,400 upon del E electron volt. Del E electron volt. Del E electron volt. 12,400. 12,400 upon 12,400 upon del E in electron volt. Del E. Change in energy electron volt in electron volt. Armstrong. Okay. Lambda is equals to hc upon del E. The hc is 12,400 upon del E in electron volt will be, this whole will come in Armstrong, right? Yeah, Armstrong. hc upon del E is equals to 12,400 upon del E in electron volt.
Armstrong mounts. Okay, del E, change in energy is equals to h nu, energy of photon. Del E is equals to h nu, del E is equals to h nu, del E equals to, del E is equals to h nu, del E is equals to h nu, del E equals to h nu, energy of photon. And change in energy is equals to final minus initial or initial minus final. Change in energy is equals to initial minus final. Emission spectrum. For emission spectrum, change in energy will be emission, emit गर्नु हो नि त, electron emit. Lower to higher, initial to final, energy of initial minus energy of final. This is for emission spectrum. Okay, emission spectrum. Del E is equals to h nu, del E equals to h nu, del E equals to h nu, energy of photon. Del E equals to h nu, energy of photon. Del E equals to EI, initial emission spectrum. EI minus EF, EI minus EF, EI minus EF. Del E equals to EI minus EF, that is emission. For emission spectrum, energy of initial minus energy of final. Okay, E equals to E initial minus E final. For emission spectrum, emission spectrum का नाम सुनते ही धड़ लिखना. Okay, emission, EMISSION, emission spectrum. For emission spectrum, energy is equals to energy, change in energy is equals to energy of initial minus energy of final, energy of initial minus energy of initial minus energy of final, energy of initial minus energy of final. And where electron is in nth orbit, nth orbit ma cha bhane ke huncha हैन, astaghfirullah, you don't have to think about it, but you have to study. Okay, where electron is in nth orbit, n is equals to, अगर electron nth orbit में है तो n number of different transition. Okay, कतिवटा transition possible छ, number of different transition and wavelength possible in emission spectrum, number of different transition and wavelength possible in emission spectrum. N is equals to n minus 1 upon 2, n equals to n minus 1 upon 2, n equals to n minus 1 upon 2. Okay, del E equals to hc upon lambda, 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 del E equals to hc upon lambda. N is equals to n minus 1 upon 2, where n is number of different transition of wavelength possible, number of different transition of wavelength possible in emission spectrum. यो पनि कोसँग रिलेटेड छ, emission spectrum सँग र एउटा change in energy is equals to energy of initial minus energy of final छ, अर्को के छ n. This is number of, n is equal number of different possible transition, number of different possible transition for I can't take this anymore. Number of different possible transition for, number of different possible transition for n, number of different possible transition for, हाँ तो वो वही करेंगे ना, number of different possible transition for lambda in emission spectrum, number of different transition and wavelength, the different transition and wavelength possible in emission spectrum. Okay, n is equals to n minus 1 upon 2. Okay, del E, lambda is equals to hc upon del E, lambda equals to hc upon del E. E equals to hc upon lambda, lambda is equals to hc upon del E, hc upon del E, hc upon del E, hc upon del E, hc upon del E. L equals to n wavelength, L is equals to n wavelength, lambda equals to h upon p, lambda is equals to h upon p,
L is equals to n lambda, L equals to n lambda, L equals to n lambda, L equals to n lambda. You are not the alone, you are not alone, okay, not the alone, you are not alone bro, you are not alone. सब लोग कर रहे हैं, करो सारे 10 ही हुए. L equals to n lambda and lambda is equals to h upon p. पहले तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, del E is equals to hc upon lambda, जिसमें से तुम लिखोगे 12,400 upon lambda. ये लिखोगे, मैं ये कहाँ लिखूंगी, मैं तो ये वाला नहीं लिखूंगी, लैम्डा वाला जब मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहिए तो 12,400 अपन डेल ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब आएगा ना मेरा आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग वाला. तब एच सी अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा. 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा, सही तो लिखा है क्या. L equals to n lambda, L equals to n lambda, lambda is equals to h upon p, h upon p, h Planck constant upon Planck constant upon Planck constant upon p. p क्या है फिर, मोमेंटम का ना अभी obviously. Lambda equals to h upon p, lambda is equals to h upon p, lambda is equals to h upon p, lambda is equals to h upon p, lambda h upon p, lambda equals to h upon p, lambda is equals to lambda is equals to h upon p. नहीं पता यार मिलेगी कि नहीं, काश मैं सिक्किम में सोती ना तो मिल जाती ना यार, पर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, चलेगा यार, दौड़ेगा. मुझे भी COI बना दे सिक्किम की. लैम्डा इज इक्वल्स टू 12,400 अपॉन दिल्ली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, अल्लाह प्लीज हेल्प मी. L equals to n lambda, 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 and lambda equals to HP. Lambda is equals to h upon p. वैसे भी तेरे चांसेस है हिमा इस बार, अल्लाह है तो क्यों डरना. Lambda is equals to n, L is equals to n lambda, L is equals to n lambda, L equals to n lambda. Okay. पढ़ तो रहे हैं L equals to n lambda, L equals to n lambda, बस ये क्या है L. तूने छोड़े हैं L equals to n lambda. Energy maximum, energy gap, del E, energy gap maximum, electron transition between higher to first orbit, electron transition from higher to first orbit, electron transition between higher to first orbit, electron transition from higher to first orbit. Okay, del E max, del E max, energy gap maximum, energy gap maximum, maximum energy gap, electron transition between higher to first orbit, electron transition from higher orbit to first orbit, n equals to 1. Okay, जब कहिले चाहिँ एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम एनर्जी त्यो बेला हुन्छ जब हायर अर्बिटबाट ट्रान्जिसन भएर लोअर अर्बिटमा आउँदैछ. जब हायर अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन उफ्रेर के गर्दैछ, लोअर अर्बिटमा आउँदैछ, n equals to 1 मा आउँदैछ, यतिखेर म्याक्सिमम एनर्जी हुन्छ. चेन्ज इन एनर्जी del E म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ,
जब इलेक्ट्रोन को ट्रान्जिसन हायर अर्बिटलबाट n इक्वल्स टू 1 मा हुन्छ, हायर अर्बिटबाट n इक्वल्स टू 1 मा हुन्छ, इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन बिट्विन हायर अर्बिट टू n इक्वल्स टू 1 हुन्छ। ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा और मिनिमम वेवलेंथ की फोटोन निकलेगा। मैं तो कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा, फोटोन जो रिलीज होगा वहाँ से, इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांजिट होगा वहाँ से फोटोन रिलीज होगी, तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, जो फोटोन निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम निकलेगा और मिनिमम वेवलेंथ होगी। मिनिमम वेवलेंथ ये तो ब्लू वाला है ना, रेड का वेवलेंथ सबसे हाई। मैं तो भूल ही जाती हूँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा और मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा और मिनिमम वेवलेंथ की, ओके, फोटोन जो निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा। जो फोटोन निकल रही है उसका फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम होगा लेकिन वेवलेंथ मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, वेवलेंथ मिनिमम रहेगा। ओके, हाँ, गॉट इट। एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी अप, डेली चेंज इन एनर्जी। ओके, मैक्सिमम कब होगा? डेली मैक्सिमम तब होगा जब ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में करेगा। एनर्जी गैप, ओके, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप की बात हो रही है क्या? हाँ, एनर्जी गैप। अयो, ये चेंज इन एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू n इक्वल्स टू 1 होगा। गैप की बात हो रही है यहाँ पर, एनर्जी की नहीं। चेंज इन एनर्जी नहीं हो रही है इसमें। किसकी बात हो रही है इसमें? हो रही है तुम्हारी बात डेली का गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। पर आईडी जरूरी है क्या? और प्लीज अनिल मुझे मत पूछो ना, मेरा ना बहुत है। मैं जो पढ़ी हूँ वो भी भूल चुकी हूँ, प्लीज पढ़ने दो ना। मुझे नहीं पता जरूरी है या नहीं है। और हाँ, यही हो गया है अभी क्वेश्चन पैटर्न, तो हम क्या ही कर सकते हैं, पढ़ने का है ना। अब 11 मिनट है, प्लीज पढ़ने दो भाई, मुझे पढ़ना है। ET is equals to minus KE equals to, okay, total energy is equals to minus KE, total energy is equals to minus kinetic energy, total energy is equals to minus kinetic energy equals to potential energy divided by 2। total energy को के हुन्छ माइनस अफ काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस अफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस अफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा हम लोगों का? पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2 टाइम्स काइनेटिक अपॉन 2, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग होगा 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल एनर्जी है उसका भी दुगना होगा। और काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा लेकिन नेगेटिव में, टोटल एनर्जी का नेगेटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ ET, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। और आयनाइजेशन एनर्जी IE होगा, बस IE होगा, माइनस ऑफ IE। ओके, माइनस होगा इसमें भी, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन बाइंडिंग, आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन बाइंडिंग एनर्जी। आयो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, एनर्जी इक्वल्स टू माइनस n इक्वल्स टू 1 में E1 होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 में होगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13 माइनस 13 पॉइंट, ये तो तुझे पता होगा ना यार, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद होगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद होगा माइनस
I think 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाके हो माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अस्तगफिरुल्लाह मुझे अजीब लगा E1 is equals to minus 13.6 electron volt, E2 is equals to minus of 3.4 electron volt, E3 is equals to minus 1.51 electron volt, E4 is equals to minus 0.85 electron volt, E4 E5 equals to minus 0. इसमें 85 बोल रहा है ना, हाँ 85 0.85 और 0 पॉइंट कितना रहेगा बोलो तो 0.85 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.54 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गई minus 13.6 electron volt minus 3.4 electron volt n equals to 3 minus 1.51 electron volt minus 1.51 electron volt minus 1.51 electron volt minus 3.4 electron volt minus 13.6 electron volt minus 3.4 electron volt minus 1.51 electron volt n equals to 4 minus 0.85 electron volt minus 0.85 electron volt n equals to 5 minus 0.85 electron volt minus 0.85 electron volt n equals to 4 ma okay n equals to 5 ma minus 0.54 electron volt r is directly proportional to n square r is radius is directly proportional to number of orbit ka square r is directly proportional to n square okay n excited state plus 1 n excited state plus 1 et total energy is equals to E1 plus E2 okay when energy decreases wavelength increases inversely proportional cha E is equals to hc upon lambda okay so E when E increases 1 upon lambda decreases E increase भयो भने lambda decrease हुन्छ E increase भयो भने lambda decrease हुन्छ और lambda increase भयो भने E decrease हुन्छ Lyman Balmer Paschen bracket P fund. Lyman Balmer Paschen bracket P fund Brazil में P fund दो क्या fund Lyman Balmer Paschen bracket P fund Lyman Balmer Paschen bracket P fund last में Paschen bracket P fund Lyman उसके बाद आएगा Balmer Lyman Balmer Paschen bracket P fund NL equals to 1 NH equals to 2 Lyman first line and last line series limit it's okay पढ़ो Lyman NL equals to 1 NH equals to 2 first line okay Balmer को 2 okay n equals to 1 Lyman n equals to 2 Balmer n equals to 3 Paschen n equals to 4 bracket n equals to 5 P fund n equals to 1 Lyman NL equals to 2 Balmer NL equals to 3 Paschen NL equals to 4 bracket and NL equals to 5 P fund Lyman Balmer Paschen bracket P fund Lyman Balmer Paschen bracket P fund Lyman Balmer Paschen fund this is the last time I'm doing it Lyman Balmer Paschen bracket P fund Lyman Balmer Paschen bracket P fund NL equals to 3 NL equals to 4 NL equals to 5 NL okay lower orbit equals to 1 for Lyman UV rays Balmer visible NL equals to 2 Paschen infrared bracket infrared P fund infrared NL equals to 3 NL equals to 4 NL equals to 5 okay 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 infrared UV visible बाकी सब infrared
UV विजिबल, बाकी सब इन्फ्रारेड. फर्स्ट लाइनमा यिनीहरूको NH इक्वल्स टू 2 हुन्छ यसको NH इक्वल्स टू 3 हुन्छ, NH इक्वल्स टू 4, NH इक्वल्स टू 5, NH इक्वल्स टू 6 हुन्छ. ओके, फर्स्ट लाइन हो यो. कसको कुरा हो? फर्स्ट लाइन. ओके, लाइमन, बाल्मर, देन वी हेभ पास्चन ब्रैकेट P fund, NL equals to 1, NL equals to 2, NL equals to 3, NL equals to 4, NL equals to 5. यिनीहरूको NH के हुन्छ? इन्फिनिटी हुन्छ. सबको लागि NH के हुन्छ? इन्फिनिटी हुन्छ. ओके, लास्ट लाइन. यो के हो? लास्ट लाइन. ये होगा तुम्हारा लास्ट लाइन. एनर्जी कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ भन त? एनर्जी म्याक्सिमम. एनर्जी ग्याप हो यो त. ग्यापको कुरा छ त. मार देने का दिल करता है खुद ही को, लेकिन मर तो नहीं सकता ना इतनी छोटी. पता नहीं क्या होगा मेरा. डेल, इट्स ओके माँ, यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू इट. ऐसा करके ना पिछाक करके मार देना का दिल करता है, लेकिन यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस ब्रो. करना ही होगा. तो वो ना ऑप्शन नहीं है. हाँ तो करूँगी ही बोल रही हूँ ना तब तो. इट्स ओके माँ, इट्स ओके. कुछ तो कर. अरे 300 की लाइन में मत लेना प्लीज़. 400 तो अब अभी कर सकती है माँ. क्यों घबरा रही है? कर सकती है. तुम कर सकती हो. डेल E max is equals to E max. Gap, okay. Energy gap maximum, lambda minimum, frequency maximum. Photon का PHOT. The released photon will have minimum wavelength and maximum frequency. Minimum wavelength and maximum frequency. E into V stopping. Okay, E into V stopping. क्या बोल रहा है यहाँ पर? E into V stopping potential is equals to H mu minus phi. H mu, energy of photon, work function minus phi. Okay, stopping potential. ये यहाँ पर छोड़ दो, पीछे जाओ. ओके, E into V stopping is equals to H nu. Okay, this is H nu. Frequency, energy of photon. Minus phi, work function. E into V stopping. H nu minus phi. H nu minus phi. Okay. और पहला वाला स्लॉट खत्म हो गया. कौन है? अनिल, इफ यू आर देयर नाउ यू कैन टॉक.
अस्तगफिरुल्लाह, गॉड डैम। पढ़े 1 मिनट ही है, 1 minute 27 seconds लेफ्ट। क्या करे क्या करे, पढ़े।
cot 30 degree root 3, cot 30 degree root 3, cot 60 degree 1 by root 3, cot 45 degree equals to 1, cot 30 degree root 3, cot 30 degree root 3, cot 60 degree 1 by root 3, cot 45 degree 1, cot 45 degree 1, cot 45 degree 1. Okay, cot 30 degree root 3, cot 60 degree 1 upon root 3, cot 45 degree is equals to 1, cot 30 degree is equals to root 3 under root 3, cot 30 degree is equals to under root 3, cot 45 degree is equals to 1, cot 45 degree is equals to 1 by root 3. Okay, 1 by root 3. Okay, cot 30 degree is equals to under root 3, cot 60 degree is equals to 1 by root 3, cot 45 degree is equals to 1, cot 60 degree is equals to 1 upon root 3, 1 upon root 3. Okay, तो कर सकती है इमा D is equals to K2E ZE upon kinetic energy. D is equals to K2E ZE upon kinetic energy. Okay, कदे ना कदे फिर मिलाएंगे. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच D, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये होगा तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ DISTANS, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट CLOSEST, क्लोजेस्ट APPROA अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच D is equals to K2E ZE upon D, upon D, kinetic energy upon kinetic energy upon kinetic energy upon kinetic energy D. Okay, D, distance of closest approach, distance of closest approach D, distance of closest approach APPROACH approach, distance of closest approach. कितना आएगा बोलो तो इसमें से 260 into 260 into 1 2 3 4 0 5 5 5 2 5 5 10 11 12 1200. ओके 1000 2003 4 7 7 7 71 7 4 28 7 4 28. Distance of closest approach. Okay, D is equals to K2E upon distance of closest approach is equals to distance of closest approach is equals to distance of closest approach KE, K2E ZE 2 electron ZE square. Okay, ZE square 2 2E ZE upon kinetic energy, K2E ZE upon kinetic energy, K2E ZE upon kinetic. Done. K2E ZE upon kinetic energy. K इसको K से लिख सकते हैं 2K, नहीं K को सेपरेट लिखो, नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं है. 2E ZE square 2E ZE upon kinetic energy.
kinetic energy. Okay, leave it. Atomic number of element. Okay, ये distance of closest approach है. Then we have B. B is impact parameter, right? I guess so. I guess so. I guess so. Parameter. Impact parameter. You can do it, bro. Good luck. Impact parameter. B is equals to kZe square upon kinetic energy. B is equals to impact parameter B. B equals to kZe square. Kz square upon kinetic energy. Kze square upon kinetic energy cot theta by 2. Cot theta upon 2. 2Ze. Square थियो नि त हैन अपन काइनेटिक एनर्जी थियो kZe square. kZe square upon kinetic energy theta cot theta by 2. Cot theta by 2. Cot theta by 2. Cot theta by 2. This is impact parameter. Okay, kZe square upon kinetic energy. kZe square upon kinetic energy cot theta by 2. Cot theta by 2. Cot theta by 2. B, impact parameter. B is directly proportional to cot theta. Theta upon 2. B is directly proportional to cot theta upon 2. Cot theta upon 2. B is directly proportional to cot theta. Theta up to. Okay, B impact parameter के सँग directly theta by 2 मा theta by 2 सँग के directly proportional हुन्छ impact parameter. Okay, B impact parameter is 0 when theta is 180. जब theta maximum हुन्छ impact parameter के हुन्छ 0 हुन्छ. Theta, angle of scattering. Theta is angle of scattering. Angle of scattering. ANGLE. Angle of scattering. Theta is angle of EMA node. Theta angle between direction and alpha particle. Okay, छोड़ दे. B equals to 0 when theta is equals to 180 degree. When theta is equals to 180 degree, B is equals to 0. When R increases, atomic radius decrease. Atomic number decreases when R increases. R increase भयो भने atomic number decrease हुन्छ. R increase भयो भने radius increase भयो भने atomic number कसरी decrease हुन्छ है? क्या लिखा है मैंने ये? कहाँ से लिखा मैंने ये? atomic number जति बढ्छ नि त radius चाहिँ त्यति नै बढ्दैन ना? भाई मैंने तुम्हें कहाँ से लिखा? फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज. अच्छा 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 यहाँ पर जो नोट है नोट फैक्ट चेक. पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली भनेको चाहिँ पॉजिटिवली अस्ताक फिरुला स्पीसीज. एटोमिक नम्बर जति बढ्छ त्यति के हुन्छ z डिक्रीज हुन्छ. ओके, रेडियस डिक्रीज हुन्छ. समझ गई मैं, ये समझ गई. इसका क्वेश्चन का आंसर भी मुझे पता है. कौन सा वाला क्वेश्चन है वो भी पता है मुझे. ओके, डन 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 डन. ये वाला तो हो गया ना. पैरामीटर. ओके, b इज इक्वल्स टू z e square kz square upon kz square upon kz square upon kz e square upon क्या हो kinetic energy. Okay, distance of closest approach. D is equals to dash upon kinetic energy. D is equals to अभी तो पढ़ा था इमा. ओके, याद आ गया. 2e k2e ze upon kinetic energy. This is the distance of closest approach. Okay, हो गया. n equals to 1. n1 को कति हुन्छ भन्दा त n1 हुँदाखेरि एनर्जी 13 minus 13.6. n2 हुँदाखेरि minus 3.4. n3
माइनस 0.85 N5 माइनस 0.54। हाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा सब कुछ, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। सांस से लेता हूँ कांडी हो जाता है वाला सिचुएशन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आई नो यू कैन डू इट रीमा। तुम सबसे तेज हो। अपोजिट डायरेक्शन में, अच्छा कोई बात नहीं। Explanation of Bohr's quantization by de Broglie. Lambda is equals to h upon p. Okay, lambda is equals to h upon p. ये तो लिखा है ना हमने, lambda equals to h upon p. Okay, for matter and wave, from matter and wave, ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ही स्टैंडिंग वेव बनेगी। L equals to n lambda, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर जो L है ये क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, LENGT, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, n lambda। ओके, वेव फॉर्म स्टैंडिंग वेव, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ही स्टैंडिंग वेव बनेगी। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन of standing wave, STENDING, standing wave, WAV, wave, formation for the standing, okay, condition for the formation of standing wave, condition for the formation of standing wave, condition for the formation of standing wave, lambda is equals to sorry, L is equals to n lambda, L equals to n lambda, L equals to n lambda, condition for standing wave formation. Okay, length of the string L. Okay, P is equals to mv, momentum, ये तो सीधा सीधा momentum, P momentum. Okay, length, lambda is equals to h upon mv, lambda of electron in orbit, wavelength of electron in orbit, h upon mv, h upon mv। हाँ तो यहाँ से आएगा तो h upon mv, h upon mv। Okay, circumference of the circle 2 pi r, कहीं लिखा है क्या circumference of the circle? नहीं लिखा है ना, तो लिख दो, कहीं घुसा दो उसको भी। circumference, FERENC, circumference of the circle, कोई बात नहीं तुम कर सकती हो। circle 2 pi r, circumference of the circle is equals to 2 pi r, कोई बात नहीं, 2 pi r, 2 pi r, 2 pi r, circumference of the circle 2 pi r is equals to n lambda, length of the string. Okay, circumference of the circle standing wave, L equals to n lambda। Okay, circumference of the string को string छैन नि त, त्यसै कारण क्या string छैन, length of the string यूज नगरेर के गर्छ, circumference of the circle लिँदैछ, total length of the orbit equals to 2 pi r। Okay, 2 pi r और n lambda, lambda is equals to h upon mv, यहीं से आएगा हम लोगों को, क्या आएगा, mvr is equals to n integral mvr। okay, angular momentum is equals to n h by 2 pi, हाँ यहाँ से आएगा। standing wave, energy was confined fixed, no energy loss। okay, standing wave मा के हुन्छ, energy was confined fixed, no energy loss। okay, got it। इसमें से तुम कर सकती हो तो। Explanation of Bohr quantization,
Bohr quantization. BOHR apostrophe S. Bohr's quantization. Bohr's quantization by de Broglie. Bohr's quantization by de Broglie. Gives MVR is equals to NH by 2 pi. NH by 2 pi. L. Angular momentum. That's it. इतना ही पढ़ना है. Limitation of, okay, explanation of Bohr quantization by de Broglie. Bohr quantization ना बोले, de Broglie ले explain करेगा. Limitation. Okay. Applicable, valid for single electron species. Example: hydrogen, helium plus, lithium 2 plus. Okay. Couldn't explain relative intensity of wavelength in emission spectrum. Relative intensity of, okay, comparable intensity of wavelength in emission spectrum. Okay. कुछ frequencies and wavelength की photon more, कुछ frequency and wavelength की photon less. Okay. More than other. Okay. Limitations. Bohr. Limitations of Bohr का ही होगा ये limitation. Notes में भी applicable. Okay. Limitation of Bohr model भी लिखो. Limitation of Bohr. Limitations of Bohr quantization. Bohr's quantization. Limitation of Bohr quantization. MVR equals to NH by 2 pi. NH by 2 pi. NH by 2 pi. कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है ना. Limitations of Bohr model quantization. Okay. SINGLE, single electron species. This valid for only single electron species. Okay. Relative intensities. Couldn't explain relative intensity of wavelength. Relative intensity of wavelength in emission spectrum. In emission spectrum, relative intensity of wavelength. Relative intensity of wavelength. Relative intensity of wavelength. Relative intensity of, couldn't explain relative intensity of wavelength in emission spectrum. हाँ. तो क्या कहा? According to Bohr principle, the relation between principal quantum number n and radius of the orbit is r is directly proportional to n square. R equals to 2.19 into 10 to the power 6. ये दिया है ना मैंने तो. Z upon n है मीटर पर सेकंड है मेरे लिए तो. हाँ. लेकिन R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है. ओके. R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. According to Bohr principle, the relation between principal quantum number n and radius of the orbit and principal quantum. अरे कहाँ गया ये? Radius. Excuse me.
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, तो मैं कब से ऑर्बिट सोच रही थी. अकॉर्डिंग टू बोर्स प्रिंसिपल रिलेशन ऑफ r is directly proportional to n square. Okay, principal quantum number. Okay, radius of excited state of H hydrogen atom will be first excited only n plus 1. Radius of first excited state भनेपछि n plus 1. n कति छ 1 छ 1 plus 1. The radius of first excited state of hydrogen atom will be radius r is equals to 2.19 into 10 to the power 6 z upon n. हाइड्रोजन एटम को लिए लागि भनेको छैन 1 1 upon excited state 2 हुन्छ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 कति छ 18 2 9 जा 18 r is equals to 1.95 into 10 to the power 16 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. अरे वेलोसिटी को तुमने क्यों लिखा इमा क्या हो रहा है भाई. r is equals to 0.529 पता n square upon z आर्मस्ट्रॉन्ग n square upon z आर्मस्ट्रॉन्ग है ना. r is equals to 0.529 into n square upon z. v is equals to 2.19 into 10 to the power 6 z upon n मीटर पर सेकेंड. ये वाला आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा और तुम्हारा ये काइनेटिक एनर्जी वाला -13.6 n square upon z square electron volt. Then we have time is equals to 1.51 into 10 to the power minus 16 n cube upon z square second. r is equals to 0.529 into for hydrogen atom z तो 1 ही रहेगा, n कितना रहेगा 4. Then 4 5 20 9 1 9 9 9 4 36 को 6 3 दो ना 1 4 4 2 8 9 10 11 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग. करेक्ट. सही जा रही है. Ratio of radius first orbit of hydrogen equals to 1 dash. भनेपछि यहाँ पर कति हुन्छ भन्नु त n square z armstrong. Okay, first orbit of hydrogen atom armstrong hydrogen atom first orbit of helium atom 529 helium Hg is equals to 0.529 into atomic number तो 2 इधर रहन्छ नि त्यसको n. helium atom
Ratio of radius of first orbit. Ratio of radius of first orbit of hydrogen. First orbit of hydrogen and helium. Helium plus atom 2:1. ओके, इतना ही रहेगा ना. 2:1 रहेगा. हाँ, 2:1 तो रहेगा ऑब्वियसली. 2:9 2 यहाँ पर जाएगा. ये तो 2:1 ही तो रहेगा. हाँ, 2:1. Ratio of radius of first orbit of hydrogen and helium plus atom means 2:1. Life is terrible. कब है नीट एग्जाम? 4. लंबा वाला था. ओके, in the Bohr model of a hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb's attraction. Between the proton and the electron. Okay, proton and the electron. If AO is the radius of the ground state, if A0 is the radius of the ground state orbit, m is the mass and E is the charge on the electron, and epsilon naught is the vacuum permittivity, the speed of electron is if U is the radius of the ground state orbit, m is the mass and electron, E is the charge on the electron, and epsilon naught is the vacuum permittivity. The speed of electron is epsilon naught r square. A naught MVR मतलब
V is equals to E square 4 pi epsilon naught m A naught. mv square upon r. Centripetal force m mv square upon r, mv square upon r, E upon under root 4 pi epsilon naught m E naught. The energy of H atom in the energy of hydrogen atom in the nth orbit is En. Then the energy in the nth orbit of singly ionized helium atom will be 6001 by the energy of hydrogen atom in the nth orbit is En. Then the energy in the nth orbit of singly ionized helium E is equals to minus 13.6 Z square upon n square. Singly ionized helium atom will be 2.4 n. The energy of H atom in nth orbit is En, and then the energy in the nth orbit of singly ionized helium atom will be En 4 En. और जब मुझे मुश्किल है जीना मुश्किल है. What will be the first ionization energy for the helium atom? Astaghfirullah. First ionization minus 13.6 electron volt. Minus 13.6 electron volt. First ionization energy for helium. First ionization energy for helium atom. Can't calculate, okay? A note, helium can't be He plus can't be calculated. Ionization energy for He atom. Actually the first ionization energy मैंने कहा ionization. Remove an electron. He 2E. Bohr
model rule is not applicable for helium. Okay, singly charged species को लगी मत single charged species को लगी मत valid is lithium. First ionization energy for helium atom can't be calculated. Bohr module rule is not applicable for helium. What will be the first ionization energy for helium atom? What will be the first ionization energy for helium atom? The first ionization energy for helium atom is 24. The first ionization energy for helium atom is 24.58. Calculate the second ionization energy. Can we calculate first ionization energy for helium atom? Bohr's law. Yes, the first ionization helium atom can be calculated. The first ionization energy of a helium atom can be calculated using the laws of electromagnetism. How to calculate first ionization of helium? अरे जो सर ने डेटा दिया है वही पर ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, छोड़ दे बाकी सब सर के ऊपर. First ionization energy can't be calculated using Bohr's postulate for helium atom. For helium atom, first ionization energy can't be calculated by using Bohr's postulates. Bohr's postulate, okay. For helium, okay. Single electron species can't be calculated. Note, He plus can be calculated. First ionization enthalpy energy for helium atom is अच्छा यहाँ तो दिए ही रखा है ना 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टू सिक्स 12 to 1 again 2 3 6 7 27.2. The energy required to remove both the electron from He atom will be first को तो calculate कर सकता. Energy is equals to 6 First ionization for helium atom
energy required to remove both the electrons from helium atom will be 54, 50, 60, 70, 70 4, 6, 24, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 54, 50, 60, 70, 79, 79 होगा electron volt correct. Kinetic energy of electron in second excited state of lithium plus atom will be lithium भी plus होना चाहिए ना. Second excited state. Okay, 2 plus 1 is equals to n. N equals to 3. Kinetic energy Ke is equals to T 13 point that's 13.6 z square upon n square. Okay, 13.6. lithium को 3 3 सा 9 हो minus 13.6 positive 13.6. काइनेटिक एनर्जी पूछा है यहाँ पर. काइनेटिक एनर्जी ओके. आयनाइजेशन एनर्जी पूछा था. Ratio of time period of electron in orbit having their radius r and 4r. Ratio of time period t1 of electron in orbit having the radius r and r2 t2. Okay, t is equals to 1.51 into 10 to the power minus 16 n cube upon z square. इसमें तो r किसी से नहीं. Ratio of time period of electron, ratio of time period in electron of orbit having their radius r and 4r. Time period is अच्छा देखो. Ratio of time period of electron in orbit having their radius r and 4r will be r and 4r. While putting value, you did silly mistakes in revision.
25. Continuous spectrum Vivigure. Emission lines emit light reflect okay. All dark photons released by gas, energy is getting emitted when electron comes from higher orbit to lower orbit. Emission lines, okay. All dark, okay. Emission line में के हुन्छ Vivigure, continuous spectrum Vivigure, continuous spectrum Vivigure, continuous spectrum के हुन्छ Vivigure, continuous spectrum Vivigure छ हो. तर के यहाँनिर छ चेन्जेस भन त. Emission lines Vivigure, continuous spectrum, emission lines all dark cha, photons released by gas, energy is getting emitted when electron comes from higher orbit to lower orbit. Energy is getting emitted, energy के हुँदैछ emit हुँदैछ when electron comes from higher orbit to lower orbit. Photons released by gas, energy is getting emitted when electron comes from higher orbit to lower orbit. जब electron higher orbit देखि lower orbit मा जम्प गर्छ त्यतिखेर के हुन्छ एमिट गर्छ, के गर्छ फोटोन्स एमिट गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कलर आउँछ पिक्चर के. एनर्जी इज गेटिङ एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रोन कम्स फ्रम हायर अर्बिट टु लोवर अर्बिट. ओके सबै कलरफुल छ ओके. एभ्रिथिङ विभ गर्छ. अब्जर्प्सन लाइन्समा चाहिँ के हुन्छ जब इलेक्ट्रोनले एनर्जी अब्जर्भ गरेर हायर अर्बिटमा जान्छ लोवर अर्बिटदेखि त्यसलाई के भन्छ अब्जर्प्सन लाइन. फोटोन्स आर अब्जर्भड बाई इलेक्ट्रोन वाइल गोइङ टु हायर अर्बिट्स. ओके अब्जर्प्सन एन्ड एमिसन. La 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 la. Emission spectrum color okay. Photons release gas, energy is getting transmitted. Color visible only when electron emission spectrum okay. Then we have absorption spectrum. Color not visible. क्यों उसको फोन इतना पसंद है. When color not visible when electron is absorbed. Lower orbit. Second session done. 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे ओके. ये photons are absorbed by while going to higher orbit okay. Unique lines for each gas, fingerprint, emission and absorption. First line last line किया तो नहीं थोड़ा बहुत. ये वाला सेशन इतना वो नहीं था, प्रोडक्टिव नहीं था. प्रोडक्टिव ही था लेकिन क्या करूँ मुझे और जल्दी करना है. थोड़ा लेट हो गई मैं. 10 मिनट ब्रेक ओके. 10 मिनट का ब्रेक यहाँ पर लिख देते हैं. उसके बाद
शुभम तू है क्या वहां पर? आई थिंक काफी जल्दी। मैंने ऑलमोस्ट एंड कर दिया शुभम, तू नहीं है ये सोच के। बंटी तेरा स्लाबन स्लो है क्या? मैं भी घूम के आती हूँ फिर। बोल के जा सकता था ना।